फाइनली घाट के बारे में जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस शहर का नाम वाराणसी कैसे पड़ा। बनारस में टोटल 84 घाट्स हैं। सबसे पहला घाट है आदि केशव घाट, तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। So this is the third and the final episode of our Varanasi tour. A tour that had huge impact on me. I know what I was before this tour and how much it has changed me. I feel more at peace, more calm, more composed, more sorted in life, and probably more clear about what I want. I don't know if there is any connection, if there is any spiritual growth, but the things that has happened with me after this tour, the changes I have noticed in myself, I could not imagine it even a couple of years before. So in the previous 2 episodes, we have visited Kalvairav temple, Kashi Vishwanath temple. We have tried the famous eateries of Varanasi. If you haven't watched them, the links are in video description below. You can check them out. In this episode, we'll be first traveling to Sarnath. Then we'll be doing the boat ride, famous boat ride in Ganga. And while the boat ride, we'll be listening to the histories of the Ghats of Varanasi. And after that, we'll be witnessing the Ganga Aarti at the famous Dashashwamedh Ghat before leaving for Lucknow. So yeah, that's a different city, different story. But for now, enjoy this episode. Thank you. Sarnath is situated at around 15 km northeast of Varanasi. It takes around an hour to reach here. It is on the bank of river Varuna, one of the 2 rivers that forms the name Varanasi. Sarnath is where Gautama Buddha taught his first sermon after attaining enlightenment, and where the Buddhist Sangha came into existence through the enlightenment of his first 5 disciples. It is one of the 4 pilgrimage sites that is listed by Buddha himself, while Lumbini, Bodh Gaya and Kusinagara are the others. The Hamek Stupa marks that precise location where Buddha preached his first discourse to his first 5 disciples. The stupa was commissioned by King Ashoka in 249 BC, so that nobody ever steps on that field where Buddha preached. Sarnath Archaeological Museum is the oldest site museum of the Archaeological Survey of India. In order to preserve the antiquities found from the site, the decision was taken in 1904 and the building was completed in 1910. There are 5 galleries and 2 verandas. The antiquities in the museums are datable from 3rd century BC to 12th century AD. The entrance to the museum is through the main hall. The Shakko Simha gallery displays the most prized collection of the museum. In the center of the gallery, there is a lion capital of the Mauryan pillar, which has become the national emblem of India.
So currently we are at the Benaras Haveli restaurant near Assi Ghat. We'll have our late lunch here. শীতকালে This is a rooftop restaurant from where you can have the views of Ganga, the Assi Ghat, everything. It's really nice and it's chilling as well. It's just 4:15 here, but it's still chilling. चलिए, घाट के बारे में जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस शहर का नाम वाराणसी कैसे पड़ा। बनारस में टोटल 84 घाट्स हैं। सबसे पहला घाट है आदि केशव घाट, तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो उस घाट पे एक नदी चल के आती है प्रयागराज से। उस नदी का नाम है वरुणा नदी, जो आदि केशव घाट पे गंगा नदी से संगम होती है। पहला वो वरुणा घाट, आदि केशव घाट, और लास्ट माना जाता है अस्सी। तो जब इस घाट का निर्माण हुआ तब यहाँ पे भी एक नदी बहा करती थी जिसका नाम अस्सी हुआ करता था। तो वरुणा और अस्सी को जोड़ करके बना है वाराणसी, ये शहर का नाम है। अस्सी घाट का अस्सी नाम पड़ने का 3 रीज़न है। पहला, अभी मैंने बताया कि ये जब इस घाट का निर्माण हुआ तब ये एक जहाँ नदी बहा करती थी जिसका नाम अस्सी हुआ करता था। दूसरा, ये 80 नंबर का घाट है। इसके आगे भी 4 घाट है, लेकिन हालांकि बीच में काफ़ी गैप होने की वजह से कोई जाता नहीं। तीसरा रीज़न ये माना जाता है कि बहुत पहले जब दुर्गा मैया इधर से यात्रा कर रही थी, यहाँ से 500 मीटर दूर पे एक दुर्गा कुंड मंदिर है, दुर्गा कुंड के नाम से। तो जब दुर्गा मैया उधर से जा रही थी तो उनको थकावट हुई, तो आराम करने के लिए वहाँ पे रुकी। जब वो आराम करके वहाँ से जाने लगी तो उनकी एक सामग्री छूट गई थी जिसका नाम अस्सी था। वो सामग्री छूटने की वजह से दुर्गा मैया की मूर्ति की स्थापना हुई और उसी से संबंधित इस घाट का नाम दिया गया अस्सी घाट। अस्सी घाट के ठीक बाद था गंगा महल घाट और रीवा घाट। घाट किनारे आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएगी जिनको अलग अलग राजाओं ने बनवा रखा है। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, अपना राजपाट संभालते थे। उनको जब भी एहसास होता था कि उनकी मृत्यु नज़दीक है, कुछ ही दिनों में, कुछ महीने में मरने वाले हैं, वो बनारस में आके प्रॉपर्टी बना के रह जाते थे। सिर्फ एकमात्र रीज़न से वो यहाँ मरना चाहते थे, क्योंकि माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति बनारस में होती है। के बाद था तुलसी घाट, जहाँ से आपने बोट हायर की। घाट का नाम था तुलसी घाट। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1600 से 1700 के बीच में रामचरितमानस उसी घाट पे। आप पीछे देख सकते हैं जो येलो बिल्डिंग दिख रही है ना, जिसपे ब्लैक स्पॉट पड़ गया, ब्लैक सा, रेड टंकी के ठीक पीछे। उसी बिल्डिंग में तुलसीदास जी रहा करते थे। वो बिल्डिंग 450 साल पुराना है। आज भी उनकी कुछ सामग्री वहाँ पे पड़ी हुई है। तुलसीदास जी द्वारा स्थापित अखाड़ा और वहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर है। तुलसी घाट के बाद था जो रेड टंकी दिख रही है, रेड और येलो, इनटेक वाटर वर्क्स है। वहाँ से पानी खींच करके फिल्टर करके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई होता है पीने के लिए। तो रेड वाला तब बना हुआ है जब देश गुलाम हुआ करता था, जब अंग्रेज यहाँ शासन चलाते थे। वो जो बड़ा सा स्लोप दिख रहा है ना आप लोगों को, जैन घाट लिखा हुआ, यहाँ पे जैन टेम्पल है। जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनका यहाँ पे मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम दे दिया गया है जैन घाट। और साथ ही साथ जैन धर्म के तीसरे गुरु माने जाते हैं श्री पार्श्वनाथ जी, उनका जन्म स्थान यहीं पे है। जहाँ से आपने बोट हायर किया वहाँ से ऊपर जाके लेफ्ट की ओर एक स्कूल है बच्चों का, नंदलाल बजोरिया, वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। यह सामने केदार घाट, साउथ के विजयनगर में गौरी केदारेश्वर शिव टेम्पल यहाँ भी है।
पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में है। जितने भी साउथ इंडियन बनारस में आते हैं मोस्टली तमिल के लोग यहाँ दर्शन किए बिना वापस हो जाते हैं। जितने भी क्राउड दिख रही है आपको ना घाट पे अच्छा, जब कभी भी आप सुबह और जैसे केदार घाट पे 70 से 80% लोग साउथ इंडियन के रहते हैं ना, यहाँ पे 70 से 80% लोग बंगाली लोग रहते हैं। अच्छा, तो इस घाट का नाम है चेत सिंह घाट। बहुत सारे राजा महाराजा अलग अलग राज्यों से आके बसे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है हमारे बनारस के काशी नरेश की, इसको बनवाया चेत सिंह ने। पहले उनकी फैमिली यहाँ पे रहा करती थी, बाद में जब मुगल साम्राज्य के लोग आए तो उन्होंने बनारस पे अटैक किया, इस हवेली पे अटैक किया। तो काफ़ी लड़ झगड़ के बच के यहाँ से निकल के उन्होंने रामनगर फोर्ट बनवाया रामनगर में। अब उनकी फैमिली वहीं पर रहती है। जो भी हमारे करेंट राजा हैं उनका नाम है विभूति नारायण, अनंत विभूति नारायण। अनंत उनका नाम है, विभूति नारायण उनके पिताश्री का नाम है। विभूति नारायण के पिताश्री का नाम है चेत सिंह। उन्होंने प्रॉपर्टी अभी ये बंद रहता है मौसम, साल में एक बार खुलता है दीप दीपावली के टाइम, और जब चाहे तब यूज़ करते हैं शूटिंग वाले। रांझना देखी हो तो ওইটাই তুই যেটা বলছিলি রাঞ্জনার কোনটা হ্যাঁ অন্য কালার ছিল ওর উপরটাতে শুটিং হয়েছে नहीं, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों साथ नहाते हैं तो उनके बीच झगड़ा अवश्य होना है। झगड़ा अवश्य होना है। नारद अगर लग बाई चांस आपसे ऐसी गलती हो जाती है, आप जानबूझ के कर लेते हो, तो बगल में शमेश्वर घाट है। आप उस घाट पे जाइए, नहाइए, मंदिर में पूजा पाठ करके क्षमा याचना मांगिए, आप पुनः उसी परिस्थिति में होंगे जैसे आप पहले थे।
So after the Ganga Aarti, we went to Gadolia Chowk. We had a couple of dishes from Kashi Chaat Bhandar. Honestly, didn't feel something extraordinary, but that just be me, because it's quite a famous place and no place gets famous just like that. Beside Kashi Chaat Bhandar, there is Kuber Pan Shop, which is famous for its Banarasi pan. And if you're planning to buy pan masala, for which Banaras is quite famous of, you can buy it from a Bengali shop named Bishur Jorda. So if you are going from Dashashwamedh Ghat towards Gadolia Chowk, on the right hand side there is a gate for Kashi Vishwanath temple, and on the opposite footpath there is this shop named Bishur Jorda. Also, if you are trying for bhang lassi for the first time in Banaras, there are a couple of shops at Gadolia Chowk. You can try it there. But please make sure if you are trying it for the first time, if you are having bhang for the first time, please do not have it alone. Have someone with you. And also make sure you started with a lighter note. There are 3 types, I guess: light, medium, strong. So start with the light one. And also what people generally make mistake is they sip a glass and they think nothing is happening to them. So they sip 2-3 more. And that is where the problem arises, because bhang is something that doesn't affect you immediately. It takes time, might be half an hour, 1 hour, and it might be in 10 minutes also. So it doesn't affect you immediately. It's not like you will have a glass and suddenly you will start hallucinating or something like that. So people make mistake that they think nothing is happening to me, so they have more, and that is when it start affecting, you get blown out of your proportion. So never do it. So be careful. But yes, bhang lassi is one of the speciality of Banaras. It's one of the speciality of the place. So obviously you should try it. You can try it if you want, but please be careful. So that's it for the Banaras. In the next episode we'll be traveling to Lucknow. So that's a different series coming up named Adab Lucknow. It will be coming up soon. So please stay tuned to our channel. And also, if you like this video, please like, comment, share and subscribe. So I will upload one more clip in Banaras. That's not a proper vlog, but I'll cover all the eateries we have tried. Tab tak ke liye, alvida, khuda hafiz, take care, bye bye.